Hello guys, welcome to my channel AhaniacStyle. I hope you all are doing good. So आज मैं आप लोगों के साथ एक लुक शेयर करने वाली हूँ। कुछ हफ्ते पहले मैं एक पोल डाली थी इंस्टाग्राम में कि मैं क्या शूट करूँ, मतलब एक आईलाइनर ट्यूटोरियल और अ मेकअप ट्यूटोरियल. Many people voted for eyeliner tutorial and many people voted for makeup look, but आईलाइनर ट्यूटोरियल में ज़्यादा वोट थी, इसलिए मैं वो वीडियो करी थी. फॉर दैट पीपल दोज हु वांटेड अ मेकअप ट्यूटोरियल और अ मेकअप लुक, मैं उन लोगों के लिए आज एक मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ. आई होप आप सब लोगों को अच्छा लगेगा. तो और ज़्यादा बक ना करके चलिए मेकअप स्टार्ट करते हैं. सो मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैं मेरी फेस को थोड़ी सी क्लीन कर लूँगी वेट वाइप से. चलिए मेकअप स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द प्राइमर. नायका का प्राइमर है ये, प्रेट मी अप प्राइमर. ये एक सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है. इट्स अ वेरी गुड प्राइमर. आज मैं थोड़ी सी भी प्लान्ड नहीं हूँ मैं क्या मेकअप लुक शेयर करूँगी. सो आगे आगे देखते जाइए क्या लुक क्या आउटकम होता है. तो मैं फिंगर्स से अच्छे से blend अच्छे से फुल फेस done with the primer. So for the foundation I am going to use this Maybelline Fit Me foundation. मेरा शेड है 128. इट्स अ परफेक्ट मैच फॉर मी. सो ये मैं मेरी पैलेट में ले लूँगी थोड़ी. वन palm is enough for it. मैं 1.5 palm ली हूँ. मेरा फुल फेस एंड नेक कवर हो जाएगी इससे. सो लेट्स अप्लाई इट. ये फाउंडेशन ना बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है, एकदम मक्खन के जैसे ब्लेंड होता है. सो आई लव दिस फाउंडेशन. आप लोग देखना ये कितना मैजिकली ब्लेंड होगी. Then I'm going to use the concealer. Is from Insight Cosmetics. My shade is NC1 Porcelain. ये थोड़ी सी लाइट है मुझसे. अंडर आईज को हाईलाइट करने के लिए इट्स अ गुड कंसीलर. ज़्यादा हाईलाइट थोड़ी सी आपको बहुत फुल कर सकते हैं. बहुत अच्छे से ब्लेंड हो चुकी है. नाउ मैं शुगर की बनाना पाउडर यूज करूँगी टू सेट द फुल मेकअप.
आप लोगों को ज़्यादा वाइट लग रहा होगा तो ये ठीक हो जाएगी थोड़ी देर बाद, बिकॉज प्रोडक्ट ऑक्सीडाइज होती है, ऑक्सीडाइज होने के बाद ठीक हो जाएगा, सेट हो जाएगा। सो मेकअप अच्छे से सेट हो चुकी है। नाउ बिफोर आई स्टार्ट माई आई मेकअप एंड डू माई ब्लश एंड हाईलाइटर, तो मैं पहले मेरा जो बेस है उसको सेट करूँगी विद दिस एलेगेंट प्रो सेटिंग स्प्रे। विल मूव ऑन टू माई आई मेकअप। देखते हैं आई मेकअप क्या करेंगे, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। सो मैं जो आई शेडो पैलेट यूज़ करूँगी, ये आई शेडो पैलेट है मेकअप रेवोल्यूशन की। दिस शेड आई एम गोइंग टू यूज़। आई बेस आई एम गोइंग टू यूज़ दिस कॉम्पैक्ट पाउडर की जैसा एक शेड है, वाइट वाइट सा क्रीमी क्रीमी से कलर है। सो जो भी है मैं ये क्रीज कलर एज वेल यूज़ करूँगी। तो क्या होगा अगर मैं एक लाइटर शेड पहले कॉम्पैक्ट पाउडर जैसे लगाऊंगी, तो जो मैं दूसरा कलर यूज़ करूँगी वो अच्छे से पॉप अप होगा। मैं सोच रही हूँ आई मेकअप थोड़ा सा सटल रखती हूँ, बिकॉज सटल मेकअप ना थोड़ी सी एलिगेंट लुक देती है, अच्छा लगता है। सो देखती हूँ सटल में क्या क्या जाता है। सटल अच्छे से सेट हो चुकी है। So I'm taking this angular brush and taking this brown shade. Now मैं ये अच्छे से स्मच कर दूँगी। मैं सोच रही हूँ जस्ट हाफ आईलिड में मैं शिमरी शेड यूज़ करूँ, दिस रोज गोल्ड वन, जस्ट हाफ आईलिड तक फिंगर की हेल्प से, ज़्यादा नहीं, ओवर नहीं करेंगे। आई मेकअप इज डन। मैं मस्कारा लगाऊंगी। मस्कारा लगा ली हूँ। नाउ मैं blush and highlighter. I'm going to use a new blush. It's from Sweet's Beauty. Sweet's Beauty Professional Blusher. ये बहुत अच्छा है। ये एक ब्रॉन्जी पिंक कलर का शेड है, बहुत ब्यूटीफुल है। इसलिए मैं आज ब्रॉन्जर यूज़ नहीं करूँगी, सिर्फ ब्लश यूज़ करूँगी। बहुत ब्यूटीफुल कलर है, बहुत पिगमेंटेड है एंड बहुत पिगमेंटेड है। ज़्यादा लग गया, ज़्यादा लग गया, में बहुत दिक्कत आएगी।
बहुत ज़्यादा पिगमेंट है। इस गर्ल में ज़्यादा लगता है, इस गर्ल में कम लगता है, इस गर्ल में भी ज़्यादा कर देते हैं। ये ब्लश बहुत पिगमेंटेड है। ब्लश लगाने के बाद थोड़ा सा ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर देना, एक नेचुरल लुक आएगी, एक जो पाउडरीनेस है वो हट जाएगी। Now I'm going to use this highlighter from Maybelline. It's the Master Chrome Highlighter by Face Studio. ये मेरा टूट चुकी है, इसका ढक्कन भी टूटा हुआ है, देख सकते हो पूरा टूट चुकी है। So I will take a brush for this. So for the lip shade, I'm going to use this one. This is from Sweets Beauty Sugar Matte Liquid Lipsticks in the shade 06. ये एक पीची ब्राउन टोन लिपस्टिक है, ये बहुत सुंदर एक शेड है। मैं ड्रेस चेंज करके थोड़ी सी हेयर कोम एंड सेट करके आप लोग भी सब मिलती हूँ। I hope you all liked the video. If you liked the video, do not forget to like, share and subscribe to my channel AhaniacStyle for more such videos. Thank you for watching. तब तक के लिए bye bye.